हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम स्टार्ट बैंकिंग रिलेटेड एमसीक्यू चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे। टुडे आई एम चैप्टर स्टार्ट इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री से। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रेसिडेंसी बैंक इन इंडिया? ऑप्शन 1 बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। दीज बैंक आर ऑल कॉल्ड QUASI. Option 3 Imperial Bank of India was set up by Margin Presidency Bank. Option 4 These banks are the first in India. Option 5 These banks were nationalized on 1st January 1949. सोचिए आप लोग। I have a sometimes. Option 1, 2, 3 Bank of Bengal, Bank of Mumbai, Bank of Madras. These banks are also called QASI Bank. Option 3 Imperial Bank of India was set up by Margin Presidency Bank. Before the establishment of the Reserve Bank of India, who had been headed over the charge of exchange control? First option Allahabad Bank, option 2 Imperial Bank of India, option 3 Punjab National Bank, option 4 General Bank of India, option 5 none of the above. Option 2 Imperial Bank of India. Question number 3, which of the following statements are true अबाउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सेंट्रल बैंक से कौन सा ऑप्शन सत्य है? वही है ऑप्शन 1 इट वाज स्टार्टेड इन 1911. इट वाज इंडिया फर्स्ट स्वदेशी बैंक. ऑप्शन 3 इट्स फिफ्थ टैगलाइन सेंट्रल टू यू सिंस 1911. ऑप्शन 4 इट्स हेड ऑफिस इज इन लखनऊ. ऑप्शन 5 इट्स फर्स्ट चेयरमैन वाज सर फिरोज शाह मेहता. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 5. राइट आंसर ऑप्शन 4 रॉन्ग. एलिमिनेट हम लोग करके ऐसे कर सकते हैं. The banking system in India follow which act? First option Indian Companies Act 1949. Option 2 Negotiable Instrument Act 1881. Option 3 SBI Act 1955. Option 4 Bank Nationalization Act 1969. Option 5 none of these. आंसर इज करेक्ट ऑप्शन 5 नन ऑफ दी. इनमें से कोई नहीं. इस सभी हो जाएंगे. When was RBI nationalized? RBI का नेशनलाइज कब हुआ है? ऑप्शन 1 1 जनवरी 1949. ऑप्शन 2 1 जनवरी 1950. ऑप्शन 3 1 जनवरी 1951. 4 1 जनवरी 1952. ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज. आंसर इज 1 1 जनवरी 1949 को एस्टेब्लिश हुआ था, नेशनलाइज हो गया था आरबीआई. The central bank first headquarter was establishment. सेंट्रल बैंक फर्स्ट हेडक्वार्टर वाज एस्टेब्लिश कब हुआ है? सेंट्रल बैंक बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, बेंगलुरु, भोपाल. ऑप्शन इज 5 भोपाल. आंसर. When was BI
formed? 1955, 1956, 19 When was BI formed? 1955, 1956, 1957, 1958, 1959. Option is correct answer is 1. 1955. Which of the following public sector bank has the largest number of branches in foreign country? Option 1 Bank of India. Option 2 State Bank of India. Option 3 Punjab National Bank. Option 4 Corporation Bank of India. Right answer is option 2 State Bank of India. The only merger of two public sector banks has the large number of branches in foreign country. Option 1 Bank of India and New Bank of India. Option 2 Punjab National Bank and New Bank of India. Option 3 Allahabad Bank and United Bank of India. Option 4 Punjab National Bank and Bank of Rajasthan. Option 5 none of these. Answer is Punjab National Bank and New Bank of India. Question number 10. Which of the following bank was inaugurated by Mahatma Gandhi in 1909? Bank of Maharashtra, Bank of Baroda, State Bank of Saurashtra. Option 4 Union Bank of India. Answer is to Bank of Baroda. Which of the following term is used in bank field? Input device, mouse, eraser, bank rate, none of these. Option 4 bank rate. Which of the following flexi deposit? Demand deposit, time deposit, demand and time deposit. Fourth fixed deposit. Option 5 none of these. Option 3 demand and time deposit. Regional rural bank are sponsored by Nationalization Commercial Bank. Option 2 Reserve Bank of India. Option 3 State Bank of India. Option 4 Government of India. Option 5 none of these. Option 1 Nationalization Commercial Bank. Which is India's third largest private bank, which was early time SUTI Bank, ICICI Bank, Axis Bank, IDBI Bank, Punjab Bank, Punjab National Bank, SBI Bank. Answer is 2 Axis Bank. Which of the following does not provide interest? कौन सा बैंक इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करता? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट. ऑप्शन 5 नन ऑफ दीज. करंट अकाउंट जो है ना ये इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं करंट अकाउंट. Which of the following is APEC institution which handle reference for agriculture and rural development in India?
related bank. RBI, SIDBI, NABARD, CB, fifth. ऑप्शन थर्ड, नाबार्ड बैंक जो है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। द इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इज कैलकुलेट ऑन, इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट इज कैलकुलेट ऑन डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है या डेली प्रोडक्ट बेसिस, क्वार्टरली पे, ईयरली पे या नन ऑफ दीज पे। ऑप्शन टू, डेली प्रोडक्ट। द इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट is calculated on quarterly, bi-monthly as per the bank, daily, none of these. Right answer is quarterly. Question number 19. What is minimum paid up capital for setting up a commercial bank in India? 100 crore, 200 crore, 300 crore, 400 crore, 500 crore. Right answer is 500 crore. Who is the founder of Punjab National Bank? पंजाब नेशनल के फाउंडर कौन से? लाला लाजपत राय, के.वी. कामनाथ, एम.के. गांधी, शिखा शर्मा। राइट आंसर इज लाला लाजपत राय। Which bank has tagline pure banking, nothing else? Punjab National Bank, State Bank of India, Canara Bank, SIDBI Bank, none of these. Right answer is SBI. Question number 22. Which was the first Indian bank to set up an ATM in India? फर्स्ट एटीएम कौन लॉन्च किया? एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन थर्ड, आईसीआईसी बैंक। व्हाट टू डू यू मीन एलपीजी इन बैंकिंग? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबर्टी, पीस, ग्रोमिंग, लाइट पावर ग्रॉस, लिबरलाइजेशन, पब्लिकेशन, ग्लोबलाइजेशन। आंसर इज 1, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। When was IBA established? 1945, 1946, 1942, 1943. The right answer is option 2, 1946. What is CBS? Cash banking solution, core banking solution, convertible bond and solution, cashless banking solution. आंसर इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। CBS का फुल फॉर्म हो गया। थैंक यू।